हाय हेलो एंड वेलकम। कैसे आप सभी लोग। तो आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट जे आपका आज की हमारी जेंशिन इम्पैक्ट विथ सब्सक्राइबर्स इस स्ट्रीम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मॉब ऋषि भाई फर्स्ट, अरे वेलकम टू द स्ट्रीम, वेलकम टू द स्ट्रीम। अल्फा एक्स डी आज आर्कन क्वेस्ट, यस अभी ये आर्कन क्वेस्ट ख़त्म करेंगे। एंड क्या बोल रही है, कौन सा वीसी क्या कर रहे हैं आज? आर कॉन्क्वेस्ट एंड वीसी ज्वाइन करो। मैं तो हूँ वीसी पे, तुम मुझे नहीं दिख रहे। कौन सा वीसी पे हो तुम वैसे बाय द वे? तुम तो नहीं दिख रहे। और आयुष भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो लेट्स गो। जो कहाँ, मतलब कल रात को जहाँ पे छोड़ा था वो, तो कल फाइनली भाई इतने मुश्किल के बाद हमने कर दिखाया, उनको हरा दिया। बट अभी इधर भी हमें अपना काम ख़त्म करना है, तो वो भी हम ख़त्म कर ही देते हैं आज। तो ये ज़रा इसको कोफचे में लेके मारते हैं पहले। ये इधर आ रहे। डन 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 डन, कुछ जादू टोना कर रहे। दौड़ा दौड़ा के मारना पड़ेगा। ये कौन है और कौन है ये? अरे चल। फ्रोजन नहीं। नहीं यार नहीं। ओके ये एक बार नीचे गिर गया ना, अभी काम फतेह हो जाएगा। अभी ये ऊपर। भाई इनके पास आओ, एक से एक पैतरे रे। ये ऊपर कैसे आ रहा है? अरे ये ऊपर कैसे आया? ओके ओके ये दो ही बचे हैं ना, एक।
भाग भाग के ख़त्म करना पड़ रहा है, सबसे इजी टास्क है। ये इसका ये इतना रिफ्रेशमेंट Bennett. Adventure time. Get out of here. It's not over. इनका रिकवरी फास्ट हो रहा है और वो किधर है भाई? जड़ी बूटी किधर है? जड़ी बूटी किधर है? ये क्या है भाई? एक ही स्टार का देखो, ये रिवाइव कैरेक्टर रिस्टोर 150 HP। हाँ, और सेम यहीं पर है 100 HP से। सात भाई क्या खेल रहा हूँ मैं। ओके, 3 बचे। अरे चल ना, ये दो। अरे यार, अरे वो रिकवर हो गया यार उधर वहां पे। किधर है? मेरे को प्लान के साथ आना पड़ेगा। वाह, एक अच्छे प्लान के साथ आना पड़ेगा। एक सेकंड दो। रिवाइव के लिए मेरे पास एक लॉन्ग रेंज है ना। एक सेकंड। ओके ठीक है, मेरे पास एक लॉन्ग रेंज अटैकर तो है देखा जाए तो। इसको मैंने अभी ये किया है, तो ये काम कर सकते हैं कि दूर से ही ना 2-3 लोगों को हम ऐसे भी मार सकते हैं। मेरे को पार्टी चेंज करने दो। इसमें बेनेट रहेगा, ये तो मेन है। बारबरा ठीक है, बारबरा की जगह पे ना इसको लेते हैं क्योंकि ए हीलर है।
ये चल जाएगा, चलो। Oh, ow. यही से था ना रास्ता। अरे भाई तुम, सॉरी दोस्तों, सॉरी 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 सॉरी। अरे ये क्या है भाई, मेरे को चैट्स क्यों नहीं दिख रही है दोस्तों? गलती नहीं है मेरी, मेरे को तुम लोग की चैट्स ही नहीं दिख रही थी। अभी मैंने ये क्या, Good things come to those who don't wait around. वो तेरा कुकिंग मेथड पे डिपेंड है, रोबोट को मार। ओके अच्छा प्लान The है। opposite is probably true. ओके ओके मैंने पढ़ लिया, बट देखो वो मेरी गलती नहीं है। अभी मैं जस्ट मैंने मोबाइल में देखा तुम लोग के चैट्स, बट मेरे को नहीं दिख रहे थे यार। मतलब यूट्यूब स्टूडियो पे अभी देखो अपना लाइव चैट्स का सेक्शन रहता है स्टूडियो में, Weather's उसमें मैं not देख रहा bad हूँ, today. तो मेरे को नहीं दिख रहा था वो, I jinxed it. पता नहीं Now क्यों। it's bound to rain. अभी सीन क्या है पता है क्या? अभी तुम लोग चैट्स कर रहे हो ना, वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, ये दिक्कत है। ग्लिच चल रहा है, कुछ तो ग्लिच चल रहा है। थोमा होता ना भाई, थोमा क्या मारता पता है क्या? साथ में उसकी शील्ड जब आती है ना, एक नंबर। ये यहाँ पे बैठ के ये है। ये क्या मैंने उसको इधर आमंत्रण दिया क्या? ये Get ready for the gliding champion of Mondstadt. ओके एक चीज कर सकते हो, रुको। एम्बर की जगह पे ना, नहीं 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 नहीं, वो उसको उधर घूमने दो, मेरे को उसका डिस्ट्रैक्शन ही करने का है। ये My demon expelling mantra is ready. ये काम आएगा क्योंकि फ्रीज। हाँ ये देखो, अभी है ना, जब तक वो रोबोट उधर घूम रहा है ना, अब तब तक हम इसको इधर मार देते हैं। Swift and merciful. Propagate. अरे मर, तेरा मरना जरूरी है। बाकी वो किधर है? अरे किधर? Propagate. एक और होना चाहिए। हाँ हाँ ये देखो, ये देखो, ये निकला ना भूत किधर से तो। ओके नीचे है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
Swift and merciful. Terminate. One with my blade. The scourge of evil remains. Scatter. Get out of here! Teamwork is dreamwork! अरे बच्चा, बट अभी ये बच्चा नहीं है ना। अरे मेरा कीबोर्ड का सीन है, मैंने कल भी बोला ना। Not bad. Get out of here! Take this! Get out of here! ओह, फाइनली खत्म हो गया। रीसेट हो जाएगा चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अभी रीसेट नहीं होगा। किधर है वो एक बचा हुआ था बंदा? किधर है? ये इधर ही तो था वो। नहीं, अरे वो किधर है? नीचे गिरा था ना वो। ओके, ठीक है। अरे वो गलत जगह पे तो नहीं गिरा है ना? ये गलत जगह पे रही है, मैं उसको हाथ नहीं लगा सकता। मेरे को ऊपर लाने दो उसको। चलो ऊपर आना, तब मजा आएगा। ऊपर आ, ऊपर आ। इधर गया। अरे वो गलत जगह पे फंसा है भाई। मेरे को उसको बाहर निकालने पड़ेगा। एक सेकेंड। देखा 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 देखा, मिस हो गया, मिस हो गया, मिस हो गया। I always bounce back. Just watch me. हाँ, अब निकला ना बाहर। अब थोड़ा सा, तभी तुमने चीटिंग किया ना, तो मैं भी चीटिंग करेगा अभी। रुको। चोंग्योन तो रिवाइव तो करना पड़ेगा। ये भी हेल्थ वाले मशरूम्स मेरे को कहाँ पे मिले? स्टार मशरूम्स। ये भी अच्छा खासा हेल्थ दे रहा है। 300 एचपी दे रहे हैं पर हिसाब से। After all, अरे चल ना, मर ना तिकडे।
एक तो ये पत्थर के पास है भाई, हर जगह पे चढ़ता रहता है ये। एक तो ये की बटन्स काम नहीं कर रहे। और ये बार बार वो देखो, Everybody stand back! सबसे इजीएस्ट एनिमी को मेरे को मारने में तकलीफ हो रही है। सबसे इजीएस्ट एनिमी एनिमी सॉरी, एनिमी बोल रहा हूँ मैं, एनिमी को 22 सेकंड है ना। उसने रीइंफोर्समेंट बुला दी ऐसे की तैसे इधर। एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से बुरा भी है। ये नीचे गिरा वो अच्छी चीज है, एंड ये मर नहीं रहा वो ग्लिच की वजह से। धोती और चढ़ गया। ओ भाई साहब, ये इलेक्ट्रिकल है ना। 1200 HP के साथ एक टाइम पे फुल है। HP 1200 ही है, क्यों नहीं दे रही है? ग्लिच की वजह से सुरा सुन रहे हो। ओ भाई, regenerate every 5 seconds. Okay. Propagate! Back at you! Scatter! Take cover! गिरा क्या? अच्छा तो रहा था। अभी इसको चांस नहीं देना है। Springboard! अरे नहीं, Propagate! हाँ खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया, खत्म हो गया। This abyss mage dropped a talisman. फाइनली खत्म हो गया। This talisman seems connected to the Abyss Herald. But why would an Abyss Mage be carrying it? Perhaps it really does contain information अरे about their था ना बाबा, आइस रखा था इसलिए तो रखा था ना बाबा मैंने चोंगयोंग को। Engulf the faith of an enemy in flame and bring glory to Her Highness the Princess. What? Is that what it says? हाइनेस, Loom of Fate initial operation. The Abyss, seem to be carrying out a large operation. The keyword here is Loom of Fate. It seems like they are still launching the operation, or rather, are still conducting preliminary tests. है Loom of कौन से? What's that? Is it literally a... ओके, अब स्टोरी पे ध्यान देते हैं। वैसे ये कंटिन्यू करने से पहले अल्फा, जो तुमने मेरे को कल ये दिया था ना लिंक, मैंने देखा रे वो, मतलब 3rd एनिवर्सरी का जो इनका स्टोरी उन्होंने रिलीज किया था वो देखा मैंने। अच्छा है, पूरा स्टोरी अच्छा बना है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन था बट क्लियर हो गया उसमें। मिस केम फ्रॉम दोज ruins. From the horrible feeling Paimon's been getting, those eerie ruins are super likely to be
information. अरे एक नंबर वही. What message does this talisman contain? I'm reading it now. An ambitious operation. But some parts are difficult to understand. अरे ये तो वही से है ना. In short, the first phase of the plan is related to Osile, Overlord of the Vortex. The Overlord of the Vortex? You mean that god in the ocean? What do they want with Osile? Would it be the same with I Devlin? know of your past heroics regarding Dvalin, and I also know of the Abyss Order's role in the Storm Terror incident. Though you may not have been aware of it at the time, you were thwarting an Abyss Order operation similar to this one. Last time it was Venti's old friend. This time it's a huge ancient god. The Abyss Order keeps setting their sights higher and higher. Will the Abyss Order use their lies and dark magic to corrupt Osile, just as they did Dvalin? No. From the contents of the talisman, this operation goes one step further. They won't just corrupt Osile's mind. They also plan to use the ancient technology behind the field tillers to completely transform Osile's body. Is that even possible? So wait, the Abyss Order wants to make some sort of cybernetic squid god of mass destruction? Very few people today truly understand the civilization of Kanria. Though, of course, the accuracy of that understanding itself is difficult to judge. Only the Abyss Order has consistently sought out the remnants of Kanria. Despite being far from human, they seek out this lost human civilization quite persistently. The talisman's message states that they will use the defiled statue as a base, attaching Osile's limbs to construct a mechanized god. And the new core that shall replace the orb usually held by the Statue of the Seven is the eye of the very first field tiller. The eye of the very first field tiller? Oh, Paimon gets it! All those Abyss mages are looking for the special eye, right? It would seem so. This whole thing keeps getting more complicated. But basically, it all has to do with that eerie statue of the Seven we saw, right? Yes. According to the talisman, the eye should be placed in the hands of the defiled statue, thereby imbuing the newly born god with the power to topple the divine thrones of Celestia. Oh boy, the Abyss Order sure isn't holding back with this plan. Since no one knows where the first field tiller is, how about we take the information about the statue as the starting point for our investigation? Yeah, that tone-deaf bard is too difficult to track down anyway. Let's go to the cathedral first and ask around. Maybe we'll learn something. The cathedral. Huh? What's the matter, Dane? Nothing. Let's get moving. ओके ओ फाइनली क्वेस्ट कंप्लीट हो गया. मतलब ये लास्ट पार्ट था. एक स्कैटर. ये पावर बढ़ानी पड़ेंगी. Is this an answer from this world? और तू काय के लिए इधर क्या कर रहा है रे? ओके मेरे को एक बात बता ना. अभी उसने स्टैचू का जिक्र किया तो जो पता है अभी कुछ दिनों पहले हम एक रियून में गए थे. एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी अपनी. तो उसमें पता है एक स्टैचू को उन लोगों ने उल्टा ये करा था. स्टैचू ऑफ सेवन को. तो वो उसकी बात तो नहीं कर रहे क्योंकि उसमें अगर आई लगा देते तो क्योंकि ऑलरेडी वो इविल पावर छोड़ रहा था. ओके वही है मतलब.
अरे मैं यहाँ पे वो सफरचंद लेने आया था। हाँ, उस पे कनेक्ट होगा आगे। ओके, गॉड कैरेक्टर देखा। हाँ, तो अभी हमें कहाँ जाना है? गो टू पेवनियस कैथेड्रल। ओके, उससे पहले गॉड ऑफ एनिमो को कुछ अगर हमारे पास है तो ज़रा अर्पण करते हैं, लेवल अप हो जाएगा, हमको कुछ देंगे। ब्लेसिंग्स 4 है। ओके, लेवल 6 पे है रही है। 8 से स्टैमिना बढ़ेगा, क्योंकि अभी हमें 2 ही चाहिए ना। और हाँ नो, आई एम सिक ऑफ यू। इधर अरे मैंने एक वो एनीमे देखा रे आजकल। मैं वो एनीमे देख रहा हूँ रिलेटेड टू दिस, री इनकारनेटेड एज अ मतलब सॉर्ड एंड ये सब। भाई मतलब कनेक्ट लगता है। अरे हाँ, तुम लोग वो 4.4 में 2 नए कैरेक्टर्स आने वाले हैं, 4.6 में अभी न्यू गॉड कैरेक्टर आने वाला है। चल क्या रहा है ये? तुम लोग को बड़ी अपडेट मिल रही है। भाई हमें अपडेट मिलते हैं बट कहाँ शेयर करें? अरे शेयर करो फिर अपने इस पे डिस्कॉर्ड पे शेयर करो। बंदे ज्वाइन करते हैं उनको भी तो अपडेट मिल जाएगी, मेरे को भी मिल जाएगी। डिस्कॉर्ड तो डेड। काहे का डेड है ना, चल तो रहा है। चलो ओके, इतना हो गया। कैथीड्रल अल्फा, उसमें पता है एक 4 हाथों वाला गॉड है इलेक्ट्रिक वाला, वो वही है क्या? मतलब जो हमने सोचा है। उसमें एक 4 हाथों वाला गॉड है, देखो डिस्ट्रक्शन के बाद वो वहाँ पे बैठा रहता है। अरे हाँ, तो तुम ही चैट कर रहे हो, क्या ही करे, वो भी ग्लोबल चैट में। A grandiose cathedral. The people of Mondstadt clearly spent a great deal of resources and energy to construct them. But how aware of this was the Animo Archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? Faith doesn't ask for anything in return, though, does it? As long as the gods have a clear conscience about it all, there's nothing I can say about it. Shh! We're about to enter the cathedral! Don't say anything bad about the Animo Archon! And actually, the Animo Archon is... never mind! I never specifically said I would enter the cathedral. I'll leave you two to mingle with the sisters. Huh? Wait a second, sisters? What do you mean by sister? You are the honorary knight of Mondstadt. हाँ, They will surely allow you to poke into these affairs with their utmost trust. Having me tag along would only make them suspicious. Correct. And just as our little friend said, I might say something bad about the church at any time. When a non-believer steps onto holy ground, the result is never pretty. I have never received the favor of the gods in the past. I don't see any reason I would need it now, or in the future either. That's enough about that. While we've been chit-chatting, the Abyss Order continues to act. Okay, then we'll just go in ourselves and ask around.
I should warn you about one thing. Don't go mentioning the defiled statue inside the cathedral. The Church of Favonius wouldn't ignore the matter of the statue. But if they rashly tried anything against the Abyss Order, it would only ruin whatever element of surprise we may have. Also, meddling in the affairs of the Abyss usually doesn't end well for anyone. आज तुम इधर तुम्हारा क्वेस्ट कर रहे हो तो हम कल मिलेंगे नया क्वेस्ट। हुर्रे। ओके अरे नहीं अपना तो फिक्स है ना 9 बजे तक क्वेस्ट खत्म 9 बजे तक जो भी है क्वेस्ट करो 9 बजे के बाद अपना रेगुलर चालू हो जाएगा आइटम्स कलेक्शन। इनाजुमा के लिए और कितने चलेंगे बताओ ज़रा। वर्ल्ड में तो अभी ये तो नहीं करने हैं ना शेमारू के लिए जब तक वो प्रॉपर नहीं आता। ये तो एक है और ये चीज़ 3 है रे। अभी तो एक्ट 4 ही चल रहा है चैप्टर 2 ऑटोमा विंड स्कारलेट। Honorary Knight! Hi, how have you been? Do you need anything today? But I should first make it clear that if you need to borrow the Holy Lyre de Hermel again, we cannot oblige. It seems she hasn't realized it's just an illusion. Oh, we're here to ask some questions about something. Barbara, have you heard about the first field tiller? What's that? Field tiller. What does it do? Of course you wouldn't know anything about that. Okay, next question. Has the church ever lost a statue of the Seven? Huh? You're here to ask about that old story? Well, I didn't expect that. That was such a long time ago, barely anyone mentions it nowadays. A long मतलब हुआ time है। ago, there was indeed one statue of the Seven that disappeared one night without a trace. Nearly every member of the church joined the search for it, but it was never found. In the church's records, as you might assume, this incident has been called the Lost Statue of the Seven. Of course? Nothing? So do you have any other clues? Paimon means any other strange stories? Sorry, Barbara, but we can't tell you about the statue we saw just yet. Like Dane said outside, it's for your own good. Other strange stories? I'm not sure. Let me think about what other unusual incidents are in the church's records. Oh, the Tyrant's Final Fury? No, that's from another time. Probably unrelated. The Tyrant's Final Fury? ये क्या है? Oh, this refers to a time of great danger that engulfed Old Mondstadt, the place now known as Storm Terror's lair. Many, many years ago, there was a time when balls of fire would rain from the sky whenever anyone approached Old Mondstadt. Balls of fire raining from the sky? How terrifying! People at that time believed it was a curse laid down by the god of storms, so they referred to it as the Tyrant's Final Fury. This strange phenomenon continued for about a year. No one was ever able to solve it. It just gradually ceased on its own. Right. Later, the theory of the Tyrant's Final Fury became less probable, and perhaps it was something else that caused the disaster. Anyway, this incident might not be related to the lost statue of the Seven, but I just can't think of any other strange incidents that might be. It's okay. Thanks anyway! There's that pointless word, thank you, again. I can never get used to hearing कौन है it. वो? Oh, Rosaria, it's ये कौन है? If you're looking for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters again. those monsters? Those monsters that tried to attack Mondstadt last time during the Storm Terror incident? Wasn't that the Abyss Order? They're at it again? Indeed. They're gathering in Wolvendom, causing great unrest among the wolves. Could it be
that the Abyss Order is targeting the spirit of Lupus Boreas? As for what purpose, I can't say for certain. Master Jean has already headed off to Wolvendom. I must also begin to make a move myself. अरे ये तो वैम्पायर जैसी लग रही है. Then I will go as well. ये कौन है? Master Jean said you should stay at the church and continue your work with the clergy. But you're also a member of the clergy. Right. We'll go give Master Jean a hand. Oh, okay. But please, everyone, be careful. May the Animal Archon protect you all. है क्या इधर वो? और वो जो थी वो उसके ऊपर तो ये भी नहीं था, मतलब एम्बलम जैसे सबके ऊपर रहता है, मतलब कोई अगर ये वाटर आर्क मतलब वाटर की पावर है वगैरह, तो वैसे कुछ पावर भी नहीं थी उसके आसपास, मतलब एम्बलम नहीं था. जियो पायरो. ओके नीचे ही खड़ी है क्या? लेट्स गो. हमें जिन को हेल्पिंग हैंड देना है. Has the Abyss Order? This could very well have something to do with the defiled statue. But what is the Abyss Order going to Wolvendom for anyway? No, that's not likely. Unlike Osile, who was just suppressed, Andreas died long ago. Today, it is just his spirit that stands guard over Wolvendom. The Abyss Herald may just be targeting the spirit of Andreas in an attempt to garner some information from one of the Animo Archon's old companions. Okay. अब होगा एक एक हाथ. Adventure time! Scatter! A reward on the road. Get out of here! और ले आराम से चलियो. ये लोग है, ठीक है. Don't underestimate the enemy. Let's take them now. Germinate! Propagate! ओ कितने प्यारे फूल है. Forth, my blade, from whence you came! Power that isn't Python! Off we go! Scatter! एजे भाई की जय. अरे बाप रे बाप, वीआईपी क्या कहाँ दर्शन हो गए आपके. The closer we get to the target, the more enemies there are.
इमाजू It's the इंजू Abyss Order's style. वो आइस कैरेक्टर है। अरे बट उसके इधर कुछ एम्बलम भी नहीं था। Yeah, let's go! I'm इमाओ not going any further. क्यों? Huh? Why not? Is it because you're afraid of fluffy animals? It has nothing to do with wolves. It's because Boreas was an ancient god, yet he willingly became a servant of the Seven. I cannot possibly agree with his actions. I don't desire any interaction with him. Besides, you're the one people like. I'm less likable. There's nothing special about gods anyway. It's just my opinion, but a word of advice. Always be on your guard when around gods. You shouldn't place too much trust in them. But at the same time, don't go too far in the opposite direction. Don't go trying to overthrow them or hunt them down, even if the god in question is your sworn enemy. Don't trust them and don't hunt them. That's some awkward advice. Does Dane hate the Seven or is he protecting them? Lest I repeat the failings of my forebears, I will tell you one final fact. Huh? What fact? The destruction of the nation of Kanria by the gods is the reason the Abyss Order now seeks to destroy the nations watched over by the Seven. Well, enough chit-chat. We should get back to business. I will go take care of the remaining Abyss Order members in the area. Try and keep your visit with Boreas brief. Afterward, let's meet at the entrance to Wolvendom. Up, there he goes. What a strange man. Yeah, that's true. You also keep your guard up against unfamiliar gods. At the Rite of Dissension in Liyue, your decision was very similar to what Dane would do. Not the easiest situation. Honorary Knight, Paimon, what are you two doing here? जीन की पावर क्या है बाय द वे अल्फा? So glad we found you. Rosaria told us that you came here to fight the Abyss Order. ओके so हवा we में came to ओके help. एम्बलम है उसके। Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order's sudden offensive is very strange. They have surrounded Wolvendom. I am preparing to send out some knights to fight एनिमो them. ना हाँ। I just scouted out all of Wolvendom, but I did not see you. Rosaria told me that the Abyss Order is going after Boreas. But the Abyss Order and Boreas... What is the connection between them? They just like to cause trouble. Do they really need a reason? The Abyss Order already went after Dvalin. It's not too That is true. Regardless, whether the reason behind the present threat is clear or not, I will handle the situation. Honorary Knight, please go and check if Lupus Boreas is in any danger. This god's spirit... He does not often see people, but I hear that you have met him before. Maybe it is best that you are also the one to meet him this time. Okay, be careful. Thank you for your help, Honorary Knight of Favonius. अरे ये तो वहीं से आई ना, उनको मार के आ सकती थी बट अभी हमको यहाँ पे जाना है तो हाँ यहाँ से जा सकते हैं। देख के फाइट है अभी। अरे बट वो भेड़ी की ताकत अगर आइस है तो फिर हमको एक सेकंड देना। At the
nobody. अरे बट वो तो अभी हमारा दोस्त था ना जब हम आए थे। भाई काहे को डिस्टर्ब करते हो यार रोबन। एक सेकंड। कैन नॉट स्विच कैरेक्टर। उसको कैद करके रखा है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। Look! Over there, it's Razor! And the Abyss Herald! और वो कौन है? ए छोड़ उसको। You, not welcome here. So, the wolf's wretched spirit likes to raise wild pups now. You claim to be Okay. a guardian, yet your once sharp claws have clearly dulled since your days of godly glory. If you serve us, we can restore your divine powers you once held in the past. Lies. Lies. What the heck is this ceremony? He looks like he's in a lot of pain. Oh no! Is this the same thing they did to corrupt Dvalin's mind? Wolves never surrender. But this can't go on. No matter how many times you resist us, your efforts are all in vain. अच्छा दिवस भरलेत वाटतं. Bow before the abyss. Propagate! Abyssal roar. Scatter! Nick. Springboard! अरे क्या है? Propagate! No one escapes my sight. Hey! इसके साथ खेल. Everybody stand back! Scatter! Propagate! पागल हो गया, पागल हो गया, ये पागल हो गया. जली ना तेरी भी जली ना. ये मर क्यों नहीं रहा है? Scatter! ये क्या है? ये देखो. The world will fall. The end will come. That's gonna hurt in the morning. Off we go. Get him. The end is nigh. Take cover. ओके उसने अपनी वो सेफ्टी बैरियर ऑन रखा है वाटर का. The world will fall.
Adventure time. Get out of here. जरा पास में आ. To ashes. याचे दिवस भरले आता पूर्ण. The ceremony was interrupted. How fortunate for you. How does an old spirit have such determined will? No matter. This is but a small unforeseen variable. Our grand scheme will not be affected. Grand scheme. It disappeared again! Thank you. You came. Just in time. Human Lupercal. I am ashamed that you must see me in my present state. But still, the Abyss Herald underestimated my strength. ओके ओके, शांत हो जाओ. Never अभी गया refuses वो. trial, but scary outsider, not respect trial rules. I too didn't see the trap. Wait, so you mean the Abyss Order had everything prepared to corrupt Lupus Boreas's mind, then lured him out under the pretense of challenging him in a trial? Thank you. In the future, my claws must get sharper. You smelled danger and came here? No, we heard about the danger. Paimon's nose doesn't even know what danger smells like. Besides coming to help, we actually have something to ask you about too. Excuse us, Mr. Wolf God. Do you know anything about the first field tiller? I pay no heed to the contraptions of humans. I know not what this field tiller is. Though there was indeed one human-made machine that I can never forget. It entered into my proving ground by accident, and I mistook it for a challenger. But it could not think, only fight. It was designed as a pure killing machine from top to bottom. I eventually damaged it greatly with one of my attacks. Before it fell to the ground, it fled the proving ground. By the sounds of it, it's possible that could have been the very first field tiller, right? Yes, it could spin, leap high into the air, and even shoot fireballs. Although no match for a god, it was stronger than even many who wield visions. Fireballs? Hey, didn't we hear this somewhere else recently as well? Anyway, this pretty much proves that the first field tiller came to Mondstadt, doesn't it? It sounds like the first one was way stronger than the mass-produced ruin guards that came after. But in this story, it was damaged at the proving ground while fighting the Wolf of the North. Don't know. But did we help? Yes, you were a big help. Thanks. We need to keep investigating something super important. The Abyss Herald may have left, but the Abyss's forces are still attacking. You two be careful. Yes, I smell more danger. Bigger danger. You too, also be careful. Well, that was some good intel. Quick, let's go tell Dane. Finally.
बारिश आने वाली है क्या? बारिश वाला माहौल हुआ था. Dang, there you are! Did you see Master Jean? I saw her but purposely avoided her. As both the Lion Fang Knight and acting Grand Master, she naturally would have some reservations towards me. If I'm not careful, one day I may find myself becoming the object of one of her investigations. But back to the matter at hand. I defeated some of the Abyss forces but wasn't able to gather any information. Did you have more success? I see. Well then, we can more or less figure out where the first field tiller ended up. Huh? Really? Just from the Lupus Boreas story? That information combined with a more comprehensive analysis. For example, the old story you told me you heard in the cathedral. Exactly. The strange story told to you by that young sister, long mistaken to be a curse rained down by a deceased tyrant. Ah, Paimon gets it! So the Tyrant's final fury was really just missiles fired from the field tiller after it ran from Wolvendom. After it was damaged in the fight with the Wolf of the North, it must have wandered into the ruins of Old Mondstadt and stayed there. Then, whenever anyone got close, pew, pew, boom! Back then, the people of Mondstadt hadn't seen many ruin guards before, so they came to interpret it as the Tyrant's final fury. It looks like we need to make a trip to Storm Terror's lair and comb the entire area. What do you mean? Huh? You mean... Oh, Paimon remembers too! We saw that abandoned ruin guard sitting atop the tower when we went there before. Don't tell me अभी हमें वहाँ पे जाना है. अरे ये कब तक इनाजुमा कब पहुँचेंगे हम? नहीं यार, ये बहुत बड़ा है. मेरे को इनाजुमा जाने का है रे बाबा, इनाजुमा जाने का है. Time for some training? एलिमेंट्री मिस्ट्री 80 है इसकी. चलेगा, देखते ना. कहाँ पे जाने का है? टेलीपोर्टेशन. ये क्या है? This is it, right? Okay then, use your elemental sight to look for the eye. Ooh, so what did you see? कुछ भी नहीं. Huh? Nothing? Oh, what's going on? Are you sure you did it right? This requires another method. Using elemental sight on a field tiller is of no use because it is not powered by the elements. Okay. Let me give it a try. ये कौन सी पावर है? हमको भी चाहिए ये पावर. And done. Wow! It's The very thing the Abyss Herald has been seeking all along. The eye of the first field tiller. All of the ruin guards today are just replicas of this machine. Okay. As the prototype,
Its combat capability was unrestricted. Prototype? Oh, Paimon doesn't know that word. Is it another ancient term from Conria? As the Abyss Order has surmised, if this eye is placed in the hands of the defiled statue, and if the limbs of Osial, Overlord of the Vortex, are attached to the statue, there you have a mechanized god. And this newly born god will have the power to topple the divine thrones of Celestia. Yes. Then, what should we do with this eye? No. I'll guard it myself. Okay. Huh? You? Dane? You won't go and do anything crazy with it, will you? कैनरिया 3000 ईयर पहले ही टेक्नोलॉजी में आगे था। देखो मेरे को अभी एक डाउट है, पता है, अगर गॉड्स ने कैनरिया को डिस्ट्रॉय किया, बराबर, एंड एबीसी ऑर्डर अगर सेलेस्टिया मतलब जहाँ पे गॉड्स रहते हैं उस पर रूल करना चाहते थे, ये उनको क्यों रोक रहा है? क्योंकि ऑलरेडी वो मेंबर्स ऑफ कैनरिया है। As for what I mean by take care of it, naturally. Destroy it? That's a statue of the Seven! As well as being a really important cultural relic, they're actually divine too! Well, good thing we didn't tell Barbara earlier. Otherwise she'd be going completely bonkers right now! Do the Seven really expect me to help them look after what belongs to them? Let's go back to those ruins and destroy the inverted statue. If we are lucky, we will also run into that Abyss Herald. नहीं। I'll make sure it doesn't get away this time. Let's go then. मेरे को नहीं पसंद है वो रुइन। भाई कितना डरावना है वो। उसकी वजह से हमें भी नहीं पता कल अपडेट आएगा एंड इसका न्यू क्वेस्ट मिलेगा, मुझे तब देखना पड़ेगा। नहीं देखो ना, मतलब एक पॉइंट है कि अगर ऑलरेडी अगर गॉड्स ने डिस्ट्रॉय किया, बराबर, एंड ये जो एबीसी ऑर्डर है वो कैनरिया के ही लोग हैं, बस उनको कोई ये नहीं है और वो खुद से ऑपरेट कर रहे हैं एंड वो न्यूली बॉर्न गॉड चाहते सेलेस्टिया पे रूल करने के लिए, एंड डैनलिफ भी कैनरिया से ही है, तो वो दोनों साथ में होने चाहिए इन शॉर्ट। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे अंदर नहीं जा सकता। एक सेकंड में भूल गया यार, लड़ाई होने वाली है ना। एक सेकंड में ऐसे अंदर नहीं जा सकता रे। तो मे बी ये हो सकता है कि ऑलरेडी देखो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, वो जो किया था कहाँ है का वो मॉन्स्टेड का कैप्टन। नहीं देखो, झगड़ा करके डैनलिफ को है ना, मतलब जैसे तुमने कल मेरे को वो रेकमेंड किया था कि 3rd एनिवर्सरी का, देखो हाँ हाँ नहीं नहीं सुनो, तो उसमें एक पिक्चर है जिसमें इसकी बहन को ये मतलब एज अ डेड होती है ना, तब वो देखती है, वो मतलब वो ऐसा गोदी में लेके बैठा होता है, वो डेड है। वो है क्या वो, या फिर उसकी फाइनल विश कंप्लीट कर रहा है कि डोंट गो देयर, ऐसा कुछ रॉन्ग साइड। क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो उसमें जब डिस्ट्रक्शन होता है ना, तो ये डैनलिफ एक लड़की को गोदी में लेके रो रहा होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ वो भी हो सकता है, बट वो लड़की थी बाय द वे, मैं बोलूँ तो। आइस चाहिए क्या? एंड उसका विश होगा, यप वो भी हो सकता है।
लेट्स गो। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो बाहर आना पड़ सकता है। एक तो पहले ही भाई ऐसे जगहों से, एक तो तूने वो ग्राफिक्स मेरा एकदम डार्क करा है ना, डर लगता है। So after all that running around, we end और up वो right back उल्टा here लगा again. स्टैचू को देखो तो मेरे और Look at us. डर लगता We है। barely escaped this place last time, and now we're strolling right back in. Gee, surely we must be some of the bravest adventurers in all of Teyvat. That are the stupidest. To get to that creepy statue, हाँ ना, we just need to follow the path we used to escape last time. ये That should take us right to it. Yep, that'll work. Let's go, and remember to be on your guard. कैसे जाना है उधर? उड़ के? वाह, अरे भाई एक सेकंड, मैं पूरा बाहर आके एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। मेरे बैगेज में खाना वाना प्रॉपर है? एक बार देख लूँ बस। ये क्या है? पोर्शन से कुछ बकलावा है जो अपने को मिला था। ऑल राइट। 15 है ना? ओके, स्टैमिना और मिलेगा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। कितना स्टैमिना हुआ अभी? 168 था तो 176। नाइस। भयंकर फाइट। मेरे पास चाबियां भी है रे, मेरे पास चाबियां भी यूज़ करनी है। 2-3 मेरे पास चाबियां है उसकी, सामने जो दिख रहा है। एक सेकेंड अल्फा, तूने बोला था कि तूने स्टोरी अगर अब आएगी तो पता चलेगा, मतलब तूने स्टोरी कंप्लीट करी है। So after all that running around, we end up right back here again. Look at बराबर, us. मैं We जैसा अभी barely सोच रहा हूँ। escaped this place last time, and now we're strolling right back in. Gee, surely we must be some of the bravest adventurers in all of Teyvat. What are the stupidest? To get to that creepy statue, सारे वर्ल्ड तुमने एक्सप्लोर करे हैं एंड completed completed है। Right to it. Yep, that'll work. Let's go, and remember to be on your guard. अरे हीरो, अरे इसलिए तो स्पॉइलर नहीं दे रहा। ओके, मेरे को एक जस्ट बता दो, अभी जो मैं जिस हिसाब से खेल रहा हूँ दिन, हर हफ्ते के 3 दिन, तो इस हिसाब से मेरे को स्टोरी कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा? एंड हीरो भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। बाय द वे, कंपटीशन कैसे गया बताओ?
पूरा पूरा स्टोरी, मतलब अभी जब तक जितना तुमने कंप्लीट किया है, मतलब नई स्टोरी आएंगी, मतलब नया फ्रेश स्टोरी आएगा तो हम खेलेंगे। वैसा अगर करना है तो उतना करने मेरे को कितने टाइम लग जाएगा। टुडे मेरा, अरे कौन है भाई इधर? ये मेरा कंपटीशन बहुत अच्छा गया। अरे फिर 6 से 7 वीक इफ इस स्पीड में चले तो 6 से 7 मतलब 4 4 8 मतलब 2 महीने, मतलब फरवरी तक। आई मीन ओनली आर्कन क्वेस्ट। हाँ हाँ वही वही आ गया भाई डेंजरस पार्ट। मेरे को सबसे अभी दिक्कत क्या लग रही है पता है क्या? मतलब मेरे को एक गट फीलिंग है, लड़ाई होने के बाद यहीं से अपने को रिटर्न वापस जाना है। आ गया डरावना पार्ट। Looks like we're here. An eerie, lifeless, dark chamber. I understand the evil aura you were describing earlier. Oh, such a scary place. Be careful to not be overwhelmed by the power of the defiled statue. The Abyss Herald. It's here. आ गया। ये क्या डरावनी हंसी है? You sense correctly. You are just as vexatious as ever, Dainsliff, enemy of the Abyss. I sense your soul is stained by terrible bloodshed. फोटो लो मस्त वाला। Perhaps from your darkest nightmares. Unless... मेरे को ऐसे फोटो ले था जब वो मारा मारी करे, बट नहीं ले सकता ना मैं ये। You reek of a corruption familiar to me. Then we are the same. We're both dangerous. But dangers from outside of the Abyss Order must be caught and caged. It is your words that forever reek of corruption. Time to silence you! Bow before the Abyss! Propagate! ये ताकतवर हुआ, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? Propagate! A touch of frost. Get out of here! Let's light it up! Abyssal roar! जल्दी मारो, जल्दी जल्दी मारो। Propagate! साइलेंस। ओए अभी पता चला तुमने जल्दी जल्दी क्यों बोला। One with my blade. Annihilate! Scatter! Scatter! Maybe I wasn't meant for this world. क्या बात कर रहा है? तू नहीं होएगा तो कैसे होएगा?
मैं 2 ट्रॉफी विन हुआ, एक ट्रॉफी ड्राइंग के लिए एंड दूसरा ट्रॉफी रिएक्शन के लिए। नहीं नहीं, क्या लिखा है, रेसिटेशन, वो क्या होता है हीरो? Why do they never miss? Get out of here! मेरे को भाग भाग के ही करना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अरे यार नहीं ना यार, Attack! I cannot under... Get out of here! रेसिटेशन इज अ कल्चरल इन ऑल इंडिया होता है। ओके मेरे को फोर्स ज़्यादा बनाना चाहिए था, ऐसा क्यों लग रहा है? एंड अरे यार अटैक, यूज़ करा ना मैंने। Adventure time! Everybody stand back! A touch of frost. Power that gets it punched on! Get out of here! ओके This is just my... नहीं यार, Swift and merciful. Not bad. ए You haven't won yet. चीटिंग। अरे मैं उधर कुछ काम कर रहा था यार, चीटिंग करते ये लोग। ऑल इंडिया का ऑल इंडिया के अंदर सिर्फ 22,000 स्टूडेंट्स का ट्रॉफी मिलता है, मैं उसमें 20,000 में से इधर हूँ। अरे भाई मतलब ऑल इंडिया में 22,000 में से तुम वन ऑफ दी वो, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन बनता है, 22,000 में से वो ऑल इंडिया में मिला है तुमको। तीन 300 सेकेंड के लिए A touch of frost. Not bad. अरे अरे मेरी कीज काम नहीं कर रही थी भाई। Swift and merciful. I cannot underestimate my enemy. मैं कितना इसको रिवाइव करूं?
मेरी कीज काम नहीं कर रही है। इससे क्या होता है? But how? This spells the end of the exorcism. मेरे को थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा यार। इतना सब कुछ वेस्ट किया है मैंने। I never yield. बस 22 सेकेंड को। हाँ ना, कोऑपरेटिव होता तो खत्म हो जाता ना, क्योंकि अपने बेस्ट। This isn't good. हाँ देखो, हमने गलती कहाँ पर करी है मेरे को देखना पड़ेगा अभी। अबेंडन तो नहीं है। हाँ हील, अभी देखो ये और ये, तो इसके लिए तो अपने को बनता है। एंड मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि फिर अपने को इसको वापस लाना पड़ेगा। अरे वीसी पे ही हूँ मैं, स्ट्रीमिंग वीसी पे हूँ। रुको, मैं वेटिंग पे बैठ रहा हूँ, आ जाओ। वेटिंग पे हूँ, वेटिंग पे। भाई सब कुछ खराब हो गया रे। यहाँ पे कुकिंग का कुछ है? क्योंकि मेरे को फल तो चाहिए, बिना फलों के अभी कुछ नहीं हो पाएगा। सुनाई दे रहा है? हेलो 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 हेलो। लियो में जाके कुकिंग करो पहले। एक सेकंड दो। तुम्हारी आवाज़ बहुत कम आ रही है, मेरे को बढ़ानी पड़ेगी। ऑलरेडी 150, 200। ओके अब सुनाई दे रहा है? हाँ अब ठीक है, मैंने 200 कर दिया पूरा। हेलो। हाँ हाँ, आ रही है। एक मिनट। Ever want to trade tactics? I'm always ready. हेलो। ये अब आ रही है, आवाज़ आ रही है। एक सेकंड दो। हाँ अब आ रहा करूँगा, अब हो जाएगा। हाँ, पहले मॉन्स्टर पे जाके खाना खरीदो पहले, मॉन्स्टर की दुकान पे जाके। ओके एंड फिर लियर के उसके भी खाना खरीदो एंड डिश बनाओ, एक अटैक पर सेट का डिश और एचपी बढ़ाने का डिश बनाओ। तो पहले मॉन्स्टर्ड सुमेरो अनलॉक्ड है तो उस पे भी जाके खरीद लो, पूरा भर के रखो खाना। नहीं ये तो इधर नहीं। नहीं, उधर उधर, सारा सारा। हाँ यहाँ पे। बट वो अपने मोराज लेंगी तो ठीक है, कुछ और ले ली तो फिर दिक्कत वाली बात है। 200 चाहिए ना? ओके $1000 HP। चिकन मशरूम लो और ये 500 और चिकन मशरूम भी लो। डिफेंस के लिए चाहिए। पूरा लो, पूरा 5।
चिकन अब चिकन चिकन वो चिकन 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 नहीं, वो तो लिया ना पूरा। डिफेंस वाला भी लो, डिफेंस वाला तो। ये तो प्रोसेस है। ओके, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। कुकिंग 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 ड्यू। ये 7 रिजर्वेशन। पूरा रेसिपी का रिलीज पे फुल रेसिपी बाई करो। ग्रिल टाइगर फिश, चिली चिकन। ये महंगा है बहुत। ओके, ये ऐसा चीज है क्या? इसलिए मेरे पास 17 ट्रॉफी हो गया। बाप रे, 17 ट्रॉफीज। कहाँ पे गया? कुक कर लो साइड पे। एक सेकंड। फायर है ना, उस पे कुक कर लो। हाँ, एप्पल्स 1900 HP, 1500 HP। ये तो नहीं मिलेगा। ये चाहिए ना एक। नहीं, ये तो अटैक में है। वो स्वीट स्वीट मैडम है ना, इसको बनो। हाँ हाँ। ये तो है। अरे वो किधर है? वो भी यहाँ पे तो था। वो काली वाली चीज। ये एक सेकंड। ओके, ये और ये राइस है।
ये किसी पे भी लग सकते हैं भाई। तो टाइम लगता है बनने में। ओके बटर वहाँ पे एंड बाकी ये हाँ क्रिसमस प्लास्टिक पूरा कुकिंग हाँ मैं कैरेक्टर चेंज ऑटोमेटिक कुकिंग उससे मेट रोल अनलॉक। बोनस मिलेगा क्या मिलेगा? ऑटोमेटिक का कुछ तो मिला मेरे को। कैरेक्टर चेंज कौन सा कैरेक्टर? एक सेकंड, कैरेक्टर मिला मेरे को। If you ever want to trade tactics. ना अडेप्टस ये वहाँ से एप्पल फ्लोर प्रोसेस में। एक सेकंड, जेड पार्सल कुक करो हाँ वही करना पड़ेगा। एक सेकंड, Beer after a hard. ये 3 स्टार है ना। तो बटर और वो एक सेकंड, एप्पल तो मिल जाएंगे मॉन्स्टर्ड में। यहाँ पे मैंने देखा था अभी बटर। के पास भी कुछ तो था। हर अलग सिटी में कुछ अलग बेचते हैं क्या? स्पेशलिटी तो सुमेर में पानी पूरी और समोसा मिलता देखिए कभी भी लग सकता। पैसे तो मिले भाई, इतना कमा के रखा है कि कुछ भी ले सकते हैं। प्राइजेस बाद में बढ़ते हैं क्या? नहीं नहीं ना, ओके। इनका ग्राफिक्स रिलेटेड कुछ अपडेट आने वाला है? कुछ आइडिया है क्या? क्योंकि तुम लोग रेगुलर प्लेयर्स हो इसमें। PS5 में आएगा PS5 मतलब इस पे नहीं आएगा अभी, PC वर्जन्स में नहीं आएगा।
एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड है ना इस तरह, क्या क्या? ग्राफिक्स कार्ड हाँ एनवीडिया। हाँ, नहीं मेरा AMD है। ओ एएमडी, ओके हाँ। तो ये 3-4 हम्म, चाबियाँ इनको भी यूज़ करने का ना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इसका क्या यूज़ है, डोमेन रिक्वायरी टायर 3? हाँ क्या? ये 3 पड़े हैं मेरे पास कब से। हाँ आर्टिफैक्ट्स मिलता है। और इनका कुछ यूज़ है, ये सील है, जियो सील? हम्म, फिर ठीक है। It's hard to remain on dry land for so long. ये इधर मैं कुक नहीं कर सकता ना? Never quite seem to get my land legs back. क्रैब्स, मेरे को 2 मिनट देना, मैं आता हूँ। तुम्हारा फेवरेट सुपर कार कौन सी है? सुपर कार मेरी फेवरेट सुपर कार नहीं रे, मेरी तो ये है, मतलब नॉर्मल जी वैगन पकड़ लो या फिर वो टाइप के कार्स मेरे को पसंद है। सुपर कार मेरे को इतना पसंद नहीं है। एप्पल्स चाहिए 3 भाई। ये एप्पल्स यहाँ पे, एप्पल्स का तो मैं यहीं से भी ले सकता हूँ। अरे सफरचंद तो मेरे को ढूंढने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है आज? बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? नहीं आवाज आ रहा था ना, इसलिए मैंने म्यूट पे डाला है तेरे को। ये, ओके। चिकन मशरूम स्ट्यू 1200 HP 1 ऑलरेडी, यही अच्छा है फिर। 1200 HP दे रहा है तो 79 बना सकते हैं, 79 बना। अ, ये एक चाहिए था, उसके लिए 3 थे, बट कौन सा, ये चिकन वाला बेस्ट है फिर वो ये वाला बेस्ट है? चिकन वाले को ज्यादा रिसोर्सेस लगते हैं ये ना। ना, नहीं एक एक ही लग रहा है इंग्रेडिएंट्स चिकन मशरूम स्ट्यू के लिए। फिर बना दो। एक साथ ऑटो कुक के लिए कितना टाइम लगता है उसको? फाइव फाइव फाइव।
अरे हीरो ऐसा इतना मत डालो भाई, वो ये चेंज कर देगा तुम्हारा। देखा, गए तुम्हारे मैसेजेस। कैरेक्टर चेंज करो, कैरेक्टर चेंज करो। ऊपर ऊपर सेलेक्ट कैरेक्टर, सेलेक्ट कैरेक्टर। यो 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 यो। बारबरा ही अच्छी है। Behind a perfect cooking is achieved dish with extra effect, there is a 12% chance to obtain double product। क्या बात करें। बारबरा। और ऑटो कुक में मिलता है। हम्म, मिलता है। पहले 5 कुक करके देखते हैं। 5+1 ही मिला। बोनस बोनस मिलता है ना। हाँ तो देखो ना, अभी 1 पे 1 नहीं हो रहा ये चांसेस। ओके ओके, ऐसा है क्या, फिर ठीक है ना। नहीं 40 ठीक। 7 बोनस है। ओके 72 ये हो गए। एंड अभी वो चिकन किधर गया। अंडे तो बहुत है। ओके 44 ये 72 है, ये 3 है। ये तो मैन्युअली क्यों करने को बोल रहा है ये सूप। कुक इट, कुक इट। ओके मतलब ओके, इनका 5 का वो ग्रुप है। और ये फ्लावर्स किसी ना किसी चीज़ के लिए तो चाहिए, तो यहाँ पे 15 ठीक है। मैं जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम के बाद आता हूँ फिर से। ओके ओके, नो इश्यूज़। और ये 1500 HP। ये भी ठीक है। ओके ये हो गया। अब डोमेन में रोटेशन पे ध्यान देना। रोटेशन मतलब ओके वो, ओके समझ गया। कैरेक्टर से मेरे को बार बार लेना पड़ेगा। ध्यान बटाने के लिए उसको लिया, बट तो काम नहीं आई। फाइव सेकेंड फॉर नेक्स्ट 30। ओके ये चीज़ है। पहले बैनेट यूज़ करो फिर ट्रैवलर। ओके फुल नहीं है ना, ठीक है।
सब कुछ मैक्स करेंगे अभी, जितने भी रेसिपीज है सब कुक करेंगे। लास्ट बैच। यहाँ पीस ऑफ केक नहीं, क्या हो गया? इमोट्स का कुछ किया क्या तुमने अल्फा? हाँ, बैन हो जाओगे। ये किया देखो ना, हीरो के सारे मैचेस डिलीट हो गए। ज़्यादा मैं ये किया, स्पैमिंग किया तो। अ, ये तो ठीक है, ये तो सारे ये है ना, मेन तो ये चाहिए। पंद्रह सौ HP। हाँ, बारबरा यूज़ करूँगा तो रोटेशन पता है मेरे को। मेरे को बस एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए कि ओवर पावर्ड कर सके बस। अरे मैंने उसको इसलिए रखा था कि वो जब अटैक करने आएगा ना तो उनके बीच में छोड़ दूंगा वो गुड्डे को, और वो उनके ऊपर ध्यान देंगे तो मेरा तब तक इधर रिकवरी हो जाएगा। बट काम नहीं आया वो चीज़। अभी पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूँ इस बार। हाँ हाँ हाँ, वो भी है। चलो, अभी सब कुछ कुक हो चुका है। 22, 0, 46। ठीक है, इतने में तो पूरी सेना को मार देंगे। बाद में एक्चुअल ओवर पावर्ड निकलोगे। चलो, सफरचंद मिला, एक तो मिला। भाई यहाँ पे हर एक चीज़ की कीमत बहुत महंगा चीज़ है भाई। एक तो ढूंढो, पहली बात वही सबसे टास्क है। अभी ये फ्लावर्स ठीक है भाई, उग रहे हैं, नहीं तो अगर इनको भी उगाना पड़ता तो वांदे हो जाते। ओके, ये हो गया। एंड अभी कैरेक्टर चेंज, पार्टी में चेंजेस थोड़ा सा। ब्रो, वन क्वेश्चन, इफ़ कोई व्यूवर्स हमारे जैसे हम भी नहीं आते तो गेम छोड़ देते? नहीं, Wish me मेरे luck. को ये खेलना था इसलिए तो मैं कर रहा हूँ ना। अगर नहीं खेलना होता तो नहीं करता मैं। नहीं देखो, गेम पसंद है इसलिए मैंने चालू किया। अगर मेरे को पसंद नहीं होता ना तो मैं चालू भी नहीं करता, फिर कोई और गेम खेल रहा होता मैं कंटिन्यूशन में। बहुत सारे गेम्स हैं, बट मेरे को एक्चुअल में गेम पसंद है, स्टोरी वगैरह इसका। अभी मेरे को थोड़ा सा जो चाहे हम अपना दिमाग लगा सकते हैं स्टोरी में।
एक सेकंड भाई, मेरे को, मैं इधर क्यों आ रहा हूँ बार बार? मेरे को बस वो एक चीज़ अनलॉक करनी है ना। अब डोमेन करके ट्राई करो। ओके, डोमेन करके, नहीं नहीं, रुको रुको रुको। ओके, उस स्टोरी उसके बाद, ऑल राइट। मैं यहाँ से इजी से जा सकता हूँ, मैं उतना घूम के आ रहा हूँ कब से। ना 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 ना। इनाजुमा स्टार्ट होने वाला है भाई। इनाजुमा इनाजुमा इना। सब तो टॉप पे ही है भाई, इसका सब टॉप वाला ही है। 47 एलिमेंटल मिस्ट्री है। I wonder when I'll be as tall as my big sister. इनाजुमा पर लिविंग हेल बनेगा। क्या बात कर रहे हो? मोस्ट मस्त होगा देखना। ठीक है, देखते हैं अभी। ओके, फिंगर क्रॉस, एंट्री। एक सेकंड देना दोस्तों। ओके, 50-50 60 स्ट्रगल। ओके, 4 चपाती खाली है। आई उधर तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? ऐसे कैसे सुनाई दे रहा है? एक सेकंड। अरे मम्मी पूछ रही थी खाना खाया क्या, वो बता रहा था मैं। अरे मैंने इसको ये किया है, पुश टॉक पे रखा है। ओके ओके, अब नहीं होगा। ये अलग बात है भाई, घर की बातें सुनाई दे रही है उधर। माइक को क्या हुआ? माइक को कुछ नहीं हुआ। अभी मैंने ये बंद कर दिया ना, उधर पुश टॉक रखा था डिस्कॉर्ड पे, So after तो all that running around, we अभी end तुमको up सुनाई नहीं देगा मैं क्या back बात here कर रहा हूँ मेरे बैकग्राउंड में घर वालों से। again. Look at us. We barely मैक escaped दूर this हुआ है क्या? place last time, and now we're strolling right back in. Gee, अब सुनाई दे रहा है we क्या? must be some of the bravest नहीं, adventurers डिस्कॉर्ड पे in नहीं, all इधर of इधर That are the stupidest. टीम पे सुनाई दे रहा है ना बराबर? To get to that creepy statue, क्योंकि अभी बराबर है, we just देखो। need to follow the path we used to escape last time. That should take us right to it. Yep, that'll work. Let's go. Remember to be on your guard. हाँ हाँ, यूट्यूब पे सुनाई देगा ना, मैंने वो बंद किया, डीसी पे नहीं। हाँ, तो मैंने पुश टॉक रखा ना उस पर, ताकि बैकग्राउंड की नॉइस एंड घर की बातें तुम लोग को सुनाई ना दे। Looks यहाँ से like फोटो we're कैसे लूँ? F12 से होगा क्या? eerie, lifeless, नहीं। dark chamber.
Be careful to not be overwhelmed by the power of the defiled statue. You are just as I sense your soul. Oh, then we... It is your words that forever reek of corruption. Time to Propagate! Get out of here! Get out of here! नहीं Propagate! I'll protect us. कहाँ पे ये? Scatter! Let's dance. अरे इसका कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है भाई ये होने में। Off we go! Get out of here! Propagate! बस बस थोड़ा सा और। Get out of here! Propagate! नहीं नहीं मरने से भाई। अरे हील हो जा, थोड़ा तो हील हो जा। एबीसी रोर वगैरह बाद में कर लियो। नहीं यार, नहीं ये नहीं मर सकता। कौन सा था वो? अरे वो किधर गए इतने सारे? हाँ हाँ, रुको रुको रुको। सबसे बेस्ट हीलर कौन सा है? 100 HP। ये 150 HP क्यों दे रहा है? मैंने तो सबसे ज़्यादा HP वाले रखे थे। रिवाइव HP एक्सप्रेस ओके। 5 मिनट लगता है। ओके फिर ओके, हम कर सकते हैं उसको। मैं मतलब आधे तक तो लेके आ चुके ना हम। मरने नहीं देना किसी को। ये 77 उतने सारे मैंने बना के रखे थे। अटैक बफ, बट अभी मैं किसके ऊपर अटैक यूज कर रहा हूँ वो भी तो है ना। एक सेकेंड,
नहीं नहीं रुको, डिफेंस में किस पे ऊपर यूज कर रहा हूँ वो है। कुछ तो गड़बड़ हुई है रे, मेरा सामान कुछ तो कम हुआ है इसमें से। ये नहीं, कुछ तो सामान कम हुआ है। एक सेकेंड। नहीं मरा नहीं, मरा नहीं मैं, वो हेल्थ ये कर रहा था। तीनों के साथ एक साथ लड़ना बहुत मुश्किल है। Teamwork is dreamwork. Propagate. Let's dance. मैं सबसे बड़ी दिक्कत है ना वो इसकी है, पता है क्या, वो जो वो बबल है ना, वो बबल फेंकता है रे पास में। Propagate. ये और खाना नहीं खा सकता, कूल ऑन हो चुका है इसका। इसका रेडिएशन के लिए कुछ है क्या? Let the show begin. Get out of here. Propagate. लग गए लग गए लग गए लग गए, गुस्सा आ गया उसको। फुट जा बबल कहीं के। ना बफ यूज करो ना अटैक का। ओके बफ, ओके ये बोल रहे हो क्या? 1 सेकंड, ये है ना? हाँ नहीं ये नहीं, ये मैंने बनाया है ना। हाँ ये 3 है। इंक्रीज ऑल पार्टी मेंबर्स क्रिटिकल डैमेज 300%। कोऑपरेटिव, दिस इज इफेक्ट ओनली अप्लाई योर ओन कैरेक्टर। ओके Terminate. Scatter. अरे मैं हाँ इसके लिए ये लेने आया था। cannot manage another bite. Let's dance.
नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड। बहुत मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ मैं, ऐसे तो नहीं मरने दूंगा इसको। कुकिंग से ऑप्टन हो जाएगा ना, ठीक है। अरे ये इसका कुछ तो सीन है भाई, ये इसका ये ड्यूरेशन कम करना पड़ेगा। Let the show begin. तो काय रे? Why do they never miss? Eyes on me! Let's light it up! Propagate! हाँ, कुछ तो हुआ उसको। अरे डिफेंस किधर है? हाँ, ये पूरा नहीं मर सकता क्या? फिर से भागने की कोशिश कर रहा है, रुक। ये ओ भाई, Princess. Hey! Could that be? Ether. Wait! She just blocked an attack against the Abyss Herald! Your sister and the Abyss? Ether, why are you with Dane? Uh-huh. और मेरे को लगा एक टाइम के लिए खत्म हो जाएगा, उसने ब्लॉक कर दिया। Your sister knows Dane? Lumine, we meet again. What's going on here? Dane knows her too? You shouldn't team up with this man. He is my enemy. Lumine. But it must be said. Don't try to stop me. Don't try to stop the Abyss. That man, Dainsleif, was the Twilight Sword, one of the royal guards of the final dynasty of Conria. 500 years ago, he failed to prevent the destruction of Conria. A curse of immortality was laid upon him to forever wander the wilderness, while he watched the people he was supposed to protect turn into monsters of the Abyss. You're saying Dane is from Conria? The same Conria that was destroyed 500 years ago? And you said the people turned into monsters? You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not only related to Conria, but is actually the people of Conria themselves? And the whole thing about Dane being your enemy... Paimon's so confused. Home. Yes. Of course. Home is wherever we are together. But I cannot go with you to the next world to find a new home. At least, not yet. Until the Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. Listen to me, Ether.
I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did, you will see for yourself the true nature of this world. So we'll meet again. Though we need not rush, brother. I have more than enough time to wait for you. We have always had enough time. Left. Oh, don't be too sad. We'll find them again. Look on the bright side. At least we got some really useful information. Uh-huh, that's right. At least now, as well as the 7, Dane is also a key part of finding your sibling too, right? That's right. By the way, what they said just now is all pretty confusing. Did you understand it at all? Oh, well then, let's go over it again. First off, that Abyss Herald called your sister Princess. Yep. It seems like your sister is leading the Abyss Order. Even the Abyss Herald answers to her. Still, we don't know for sure if she's the highest-ranking leader in the organization. Also, your sister said that she wants to engulf the thrones and go to war with Destiny. What the heck does that mean? Could it be that she wants to destroy the 7 and the 7 nations? Next thing, turns out the Abyss Order monsters are really what the people of Conria turned into after their nation was destroyed. This story is just plain terrifying. And Dane is from Conria too. He witnessed its destruction 500 years ago. But he didn't turn into a monster. And now he's fighting the Abyss Order. So that's why your sister said that Dane is her enemy, right? But if the monsters of the Abyss are the same people that Dane protected all those years ago, then why is he enemies with the Abyss Order now? Also, how come, after all this time we spent searching for your sister, it turns out she's on the side of the Abyss? What's up with that? Yeah, you're right. Then, we can't let ourselves get down about it now. Our journey's not over yet. Let's get a move on. Time to leave this terrible dark place and get back to the surface where the sun shines bright. If your sister wants you to reach the end of your journey, well then, show her what you're made of. Come on, traveler, let's go. मैं यहाँ पे फोटो ले सकता हूँ अभी एक सेकंड. अरे बट हम ये स्टैचू को रिटर्न नहीं कर सकते क्या? एक सेकंड. नहीं रे, फोटो का कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे को. अभी देखो, जो डाउट्स मेरे को थे ना, क्वेश्चंस, वो सारे अभी इसको अभी तुमने जैसे सुना कि ये सब कुछ चीज़ें, वो सारी की सारी पाइमोन ने बता दी. जी 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 इनाजुमा जी. है नहीं, बाद में एंटर कर सकता हूँ क्या यहाँ पे? नहीं कर सकता.
अरे यार, ए इमाओ इमाओ क्या बोलते हो यार? ये मेरे को समझ में नहीं आया। ब्रो इमाओ मतलब क्या होता है? Are you okay? Paimon never imagined your sister would have sided with the Abyss. Well, keep your chin up. Paimon believes in both of you. And when the going gets tough, the tough get going. Right? She said we needed to reach the end of our journey. Paimon bets she still has lots more to tell us. And we won't find out what this journey is or where it will end unless we keep going. Then Paimon will be sure to keep up the good work. Although, where should we go next? If we want to continue with the journey... Oh, you mean the god that took your sister away in the first place? You're right. After all, everything that followed, all this confusion, it all started with her. Yeah, Paimon bets she's the key to understanding this whole mystery. Well, we've ruled out 2 gods so far, the Animo and Geo Archons. So, next... Paimon doesn't think we can simply walk into Inazuma. Zhongli said it was a closed nation. Okay. We'll have to find some other way in. Why don't we ask someone from Inazuma how to gain entrance? Oh, Paimon's thought of someone already. Atsuko in Liyue Harbor. She's from Inazuma. हाँ चलो 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 Let's पूछते see फिर। what she has to say. Atsuma Wind Scarlet Leaves। बाय द वे इसको टाइम लगेगा ना? मैं वहां पे क्यों जा रहा हूँ फिर? अथर्व मोरे, अरे हेलो भावा अथर्व भाई, कैसे अथू? इनाजुमा का रास्ता क्लियर होने वाला है। सॉरी 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 ग्रैनी, सॉरी। Oh. Hello. Oh, I mean good fortune, right? I'm still learning to talk like a local. Is there anything I can help you with? We wanted to ask, how do we get into Inazuma? Oh, so that's why you're here. Well, there is a way, Great! We came to the right person! ओके but the chance of success is incredibly small. Incredibly small? Then how did you get out of Inazuma in the first place? It was in leaving Inazuma that I found out just how dangerous this method truly was. All I had to rely on was a little wooden raft that I'd put together myself. There was a storm raging ahead of me, and my pursuers were close on my tail. Pursuers? After I'd escaped their clutches, I floated on the open ocean for I don't know how many days. My rations and fresh water supplies soon ran out, and I remember getting to the point where I was sure I'd reached the end. Then, I blacked out. But, to my surprise, my journey didn't end there. Or to put it another way, a new beginning found me. Ah, that's right. कौन है वो? I escaped by the skin of my teeth. The fact that I'm even alive to tell the tale must be a sign that the gods were watching over me. What a horrible journey!
And you set off knowing how dangerous it was? Well, because everything is just too restrictive over there. The atmosphere is so stifling. The Kanjo Commission subjects everyone leaving or entering the nation to a protracted approval process, and I felt like I didn't belong there. Kanjo Commission? What's that? Along with the other two commissions, they oversee everything in Inazuma. We usually collectively refer to them as the Tri-Commission. I suppose they're equivalent to the 8 trades under the Liu Ichising. One of the obligations of the Kanjo Commission is to conduct rigorous identity checks on all individuals leaving or entering Inazuma. All non-nationals are processed centrally on Rito upon arrival. Meanwhile, the Tenryo Commission is responsible for implementing the recently promulgated Vision Hunt Decree. They act like the executive arm of the Raiden Shogun's rule. Loyal, yet unfeeling. It doesn't feel good to speak ill of my home like this. But what I mean to say is, unless you have an extremely compelling reason to go to Inazuma, you should abandon your plans of trying to get there. You should know, and even if you did manage to find a way, you'd still have to produce the necessary documentation at the Rito Center for processing Outlanders. Seems like they really don't want anyone setting foot in Inazuma, huh? They only set that up as a port to guarantee, but if you really are that's not what I meant. You could Okay, have voyaged come on. far and wide. अगर वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन से जा सकते हैं Rima wonders if she'll be willing to take the risk. The Alcor is the Then there's no time to lose. Let's go find Captain Beta. हाँ, इनाजुमा में जाना बहुत हार्ड है, बस क्वेस्ट करके जा सकते हैं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है पता है क्या, कि ये वाला पार्ट इनाजुमा का है, ये सारा पार्ट भाई मैं कुछ भूल रहा हूँ, मेरे को चेक करने दो। मैं क्या बोलता हूँ, अगर वो क्वेस्ट करना ही है ना तो उससे पहले मैं छोटे छोटे मिनी वाले ये कर देता हूँ ना, फटक से हो जाएंगे ये चीज़ें, क्योंकि डेली कमीशन तो अपना हो ही जाएगा। डायरेक्ट टेलीपोर्टेशन के लिए मैंने उधर खोला है, मैं ये पहले छोटे छोटे ख़त्म कर देता हूँ ना। बट इनाजुमा अभी हार्ड है, देखते हैं कितना हार्ड है। क्या करना है बोलो मोहतरमा। ऊपर बुक में गाइड रियूनाइट का ऑप्शन है। बाप रे, एक सेकेंड ना, अरे तुम में मेन क्वेस्ट करो, डेली कमीशन अपने तो होते रहेंगे। ओके नहीं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ जाता ना उससे। डायरेक्ट टेलीपोर्टेशन नहीं है, यहाँ पे टेलीपोर्ट होके जाना पड़ेगा। अरे अपने आप क्लेम हो जाता है अगर मैं क्वेस्ट किया था। एक तो सर्दी हुई है मेरे को। ये कहाँ पे गया ये? भाग गया क्या? ओके ओके, वो रही, बट उधर में जाऊँ कैसे बोट पे? गो टू द अल्कर एंड मीट द ये
एक ऑप्शन है, मेरे को इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ओके, मेन क्वेस्ट करेंगे तो अपने आप ये होता है ना। ठीक है, जियोसिल 2। मैं कभी इसके इतने टॉप पे नहीं आया रे। ये ऐसे क्यों? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको। Everybody stand back! Off we go! अरे निकल ना इधर से। Adventure time! Benny's adventure team! नहीं, I have failed you. अरे की काम क्यों नहीं कर रही है? हाँ है? अरे कीज काम नहीं कर रही है भाई। ये देखो, ये कुछ अलग ही है। ये देखो ना, मेरी कीज काम नहीं कर रही है। हाँ भेजो भेजो। Crew, set sail for home. कौन? Let's dance. Go, Barbara, go! अरे मेरी कीज काम क्यों नहीं कर रही थी भाई? कीज काम करना बंद हो गई उसकी वजह से। और ये तलवार ऐसे कैसे लटक सकते हैं इधर? This is the kind of surprise I could sing about. एक सेकंड में ज़रा इसको जिंदा करके आता हूँ सबको। दिमाग हिला दिया यार। एक तो कीबोर्ड का इशू चल रहा है।
क्रिम्सन, क्रिम्सन कौन है अभी भैया? क्रिम्सन भैया आप कौन हो? जरा चैट में आके लिखो आप कौन हो क्रिम्सन भैया। सुशांत, अरे सुशांत भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। क्रिम्सन तुम हो क्या? ओके क्वेस्ट पे ध्यान दो। ओके तो मेरे को टॉप पे जाना है ना इसके। ओके ओके क्वेस्ट पे ध्यान देता हूँ मैं। उस बोर्ड तक आ जाओ। ओके और ऊपर जाना पड़ेगा। वहां तक जाना है तो और ऊपर 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 ऊपर। ओके मैं पहले सिंगल प्लेयर में जाता हूँ एंड देन तुमसे अंदर मिलता हूँ मैं। ओके एक सेकंड, पहले मैं यहाँ पे बोट तक आ जाता हूँ मैं। क्या हो गया? नेविगेट। एक ही बारे में ख़त्म करना है चीज़। प्लैनेट रेजरेक्ट नहीं हुआ। Go to the altar, meet the bro. Paidu, paidu, paidu. करो मैं बाद में आऊँगा, अभी कोई फाइट नहीं है। सो ओके मतलब अभी टॉकिंग ही चाहिए से बस। इससे पूछता हूँ किधर है मैडम जी, किधर है? कहाँ पे? हाँ यप आई एम लुकिंग फॉर द विडो। बैडू बैडू लुकिंग फॉर द कैप्टन। ओके व्हाट्स ऑल। ए भाई वो देख लेंगे, मेरे को लेके चलो भाई। तेरे को पता नहीं है मैं कौन है? ये दोनों ओके। ओ कैप्टन। Oh, if it isn't the traveler in Paimon. यप I knew you guys would come. Paimon? What a fascinating being. You two give off not only the essence of wind and earth, but also of... Yes, कौन है भाई ये? stars. Huh? The fragrance of what now? That's the weirdest compliment Paimon's ever heard. चेहरा तो दिखाओ। Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet.
and that gives our encounter meaning. You're not far off, but they go by a different name in Inazuma. I prefer other means of entertainment. This young man is Kaidahara Kazuha, Okay. a temporary addition to my crew for reasons I won't bore you with. Occasionally, he opens his mouth and flowers come out instead of words. With this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically irresponsible of me एक सेकंड, not to इसका चेहरा acknowledge देख के it with a रखना line शांत, or two सीधा of proper. poetry? Only if the mood takes me, of course. Poetry for poetry's sake. Hey, you don't want to एंड इसका चेहरा देखो अपने, थोड़ा सा सिमिलर है भाई. Also, just to clarify, by great hero, do you mean? Huh? I thought you might be here to sign up. The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There'll be a whole bunch of folks taking part to showcase their talents. There are two important rules. One, competitors must be renowned fighters. We want those with real martial arts ability, not just people taking part for the fun of it. So, you've got nothing to worry about there. I don't think there's anyone out there who hasn't heard of you. Two, you can't take part if you've got a vision. Otherwise, things get a little one-sided. You must be feeling confident, but you might want to watch out. There are a few crouching tigers and hidden dragons lurking around in Liyue. And with Liyue's savior taking part in the tournament, now that's gonna turn a few heads. I think we can expect a healthy turnout this time. But we didn't come here to take part in a martial arts tournament. Well, before you dismiss the idea completely, you might be interested to hear that the prize this time round is particularly sought after. Get this. It's a masterless vision. Huh? Supplied by myself, as a matter of fact. If the tournament champion can reawaken that vision, it belongs to them. Is there really such thing as a masterless vision? When a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. But the shell that housed that light remains. As for whether this shell has any practical application, well, this remains to be seen. But Yep, and the way I see it, a vision is a badge of recognition from the gods. So if anyone's able to rekindle it, it's gotta be an individual of exceptional strength and talent. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. And hopefully this time, getting a vision to glow again. So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. Yeah, we're interested in getting to Inazuma, not fighting in some tournament. Inazuma? You want to go there? Yep. Well, why didn't you say so? Inazuma? No sweat. In that case, if you win the tournament, I'll give you a choice. Masterless Vision, or a ticket to Inazuma aboard the Alcor. You just want him to take part in your tournament. भाई सीधा सीधा वो blackmailing type हो गया What's ये. wrong with that? The more talent we have, the better the tournament will be. I couldn't let a competitor like you fall through the net. What are we gonna do? Looks like we pretty much have to do this tournament if we want to get to Inazuma, huh? Great. Then let's get you signed up. It seems like it will only be... चलो. हाँ भाई क्या कर सकते हैं, इनको मारा मारी चाहिए. वर्शिपिंग के लिए कुछ है क्या? नहीं. पीसफुली बातें जहाँ पे सुलझ सकती है, इनको मारा मारी चाहिए. क्या ही करे. कोई ना, चलो लेट्स गो देन. अपने पास भी ज़्यादा टाइम नहीं, इनोजुमा के लिए निकलना ही है.
ये क्या है? नहीं चाहिए भाई। कहाँ पे है? Before we sign up, let's see who the other competitors are. Vader said that they had to be renowned ओ fighters. भाई साहब, इधर Who will we be up against? जरा बात कर ले इधर। हम यहाँ पे साइन अप के लिए आए भाई। Are you here for the Crux Clash too? Yep. If so, seems I found myself another new adversary. So you're also here for the tournament? You better believe it. I wouldn't be here if I didn't think I could walk away as a champion. For me, obtaining a vision is the final and most important piece in the puzzle that is my life. No. It's not about what I want to do. This is about who I want to be. I am looking to become a perfect person. I know how that sounds, but let me explain. I've passed every exam I've ever taken. In most people's eyes, I am already the very embodiment of the perfect person. Though, of course, I'd never let the praise get to my head. I know I बारिश हो haven't रही है reached क्या? perfection yet. A vision. You have so much self-confidence. यप, इसको शायद हमारे बारे में नहीं पता है। That's not important. I have a contact in the Crux fleet who was happy to vouch for me. So, they very kindly made special arrangements on my behalf. I've also brought along a bit. Of course, I also put in a few good days' practice, concentrating mostly on rare and esoteric styles of Kung Fu. I seem to. Now then, if you don't mind, I need to finish my pre-competition routine. जाओ It's भाई not too जाओ, long now before you'll get to see me in action. देखते हैं ना। सुनो, excuse me. Are you here for the Crux Clash too? That's right. Nothing beats real-life combat for honing your skills. But this tournament is more... Exactly. With a vision, we'd quickly become our master's top students. This Okay. master of yours must be pretty incredible, huh? famous. He's the founder of the Ling Shan clan, and his skills are unparalleled. Liang and I are both proud disciples of his. You probably wouldn't have heard of it. It was founded quite recently. He's got to be a grand to the Ling Shan clan. He teaches us. Forced to spurt. It's a type of breathing exercise where you can train your. For example, our master. One time, he sent a challenger flying into the air without lifting a finger. It sure is, but it's extremely difficult to cultivate. We're clearly. There's a tuition fee? Of course. But here we. Okay. Recently, though, we ये heard दोनों that a अच्छे हैं। vision- So, if we can get our hands on a vision too, maybe we can finally make our master proud. Well, we have to try something. Exactly. Folks will come from far and wide. Heck, we could. See you in the. लेकिन अंकल यून, Hello? Are you here to compete in the Crux? You bet I am. Have you put your names down yet? Well, I'd have a look at the entrance criteria if I were you. The Clash is a comprehensive test of Nobody wants to see. Yeah. Me? Only a former runner-up in the Chihu Rock Freestyle Combat Summit. Uh-huh. Also, What? You? Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders before. They tried to sneak ओके past ये me, थोड़ा सा but I ये planted है, a left hook टफ and वाला बंदा twisted है। my अंकल ground यून थोड़े से boots. टफ वाले हैं। Roundhouse kick sent the blade hurtling into a beam above us. I'm not saying I came out completely uh-huh. But for us, even for our 5 treasure, I'll see you in the arena. ओके So, to recap, we're up against an inflated ego, some gullible guys paying way too much for their kung fu classes, and another guy who's just really. Chink's a village arm wrestling champ. Next, please. What's your name? आर्म रेसलिंग चैम्प भाई मार्शल आर्ट की थी ना? Aren't you? यप आई एम। Did I hear that right? Is it
it really them? अब पता चलेगा. Aren't they a vision bearer, though? Why are they trying to enter the clash? I have to ask, aren't you the traveler that helped Liyue fight off that ancient god? Yup. Correct. Oh, it's really him! The one that spoke with Lady Kuching at the rite of parting. Oh, I wonder if I can get his autograph later. I trust you are aware that only those without visions can enter the tournament? Really? But from what I've heard, the things you're capable of in combat are nothing short of extraordinary. You walk into the most dangerous situations imaginable, face off against all sorts of monsters, even the Fatui. And oh, Yep, he still doesn't have a vision. My apologies. मेरे को एक बात बताना, अगर कोई देख रहा हो अल्फा, आयुष या फिर अतु, व्हाट इफ अगर मैं इनोजुमा का टिकट छोड़ के मास्टरलेस विजन एक्सेप्ट करता हूँ तो? So far, I've got defeated the ancient god Osial, so that's one. Do you have any others? Yeah, and also a dragon too! Whoa! Might as well declare him the champion already. I wonder if it's too late to withdraw. Okay, that's plenty. Right, your registration is complete. Now, a brief word about the prize. A great hero such as yourself can surely only be here for one thing. To win the tournament and claim the grand prize, namely, a vision. Oh, we're not here for that. We're here because Captain Beto promised to take us to Inazuma if we win the tournament. There's another prize, too? Oh, first I've heard of it. Beto must have upped the stakes this time to attract— But why would anyone want to go somewhere as... I see. So, I take it you discussed your terms with Beto in advance then. Well, nobody expected you to sign up to a tournament like this. Anyway, the qualifying rounds are about to begin. Okay. I'll leave you to your preparation. Hey, so Paimon's thinking about that whole no vision bearers rule in this tournament. Even though you don't have a vision, most people in Teyvat think that you can't manipulate the elements without one. So Paimon thinks you probably shouldn't use your elemental abilities during the tournament. In any case, looking at the competition, it should still be pretty easy for you to win. Alright, it's showtime! Let's go. You seem like you're raring to go. Are you ready to compete? Yep. Good. Then please follow me into the arena. Our next competitor is seen by many as the favorite to win this tournament. His first bout begins now. अरे वो level 75 का बंदा है. Good chance of winning this thing. You? You're the hero they're talking about? Come on, let's go sign up. How am I supposed to win that? What a strange guy. Why was he so confident to begin with? Who is then? कौन है अगला? Let's go and see Beto. She'll probably have something to say to us. अरे बट वो 75 का बंदा था. I knew I wouldn't regret. So, what do you think, Kazuha? He totally dominated that guy and did it with style, too. Impressive. But I also observed our favorite exercise some restraint, as if to protect the opponent from serious harm. Well, I've fought my fair share of battles, both big and small. So, come on. All right. Let me... You fought well. All right, then. You know... And since you signed up, we've had many others do the same, with more than a few top-tier fighters among them. Well, since everyone sees you as the one to beat, I figure I should start treating you that way too. For one thing, Come on. we don't want you wasting all your energy. So, I'm putting you straight through to the semi-finals. Okay. This is how Captain Beto works. Besides, at your level... To be fair... All right, I'm gonna watch some... Okay, let's go. Finally, हम semi-final में आ चुके हैं. We're finally here, folks. The real show is about to begin. The captain seems to have high hopes for this tournament. I have not seen her so excited in quite some... Your opponent has fought many rounds to get to the semifinals. This makes him a seasoned warrior. Don't tell me You may well कि be वो stronger अंकल than यून या फिर but उनमें this से should कोई not होगा. give you cause to lower your guard. Very well. Okay, then let's go. Push through the storm that lies ahead. All right, अपने that's को enough इनाजुमा chit-chat जाने for का now. ही है. The audience is waiting.
Go find the crew member that signed you up. She'll Wait a minute, crew member? Okay, ये ना मैडम जी Your पहुंचा दो. opponent in the semifinals is new to the Crux Clash, but he has quickly become the dark horse of the tournament. I do not doubt your abilities, but I would suggest that you make sure you are fully prepared before you begin. Relax. My guy's at the top of his game. He ain't gonna lose. Don't worry. Take some time to compose. At last, the moment we've all been waiting for. The semifinals have begun. Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? I don't care about the prize. You're a strong opponent. That's what I'm here for. Hey, girl. I'm sweating all over. Good. Congratulations. I was beaten by the best. I need to train harder. Right. For a moment there, Paimon was a little worried. If you had a vision, you'd definitely be one of the strongest around. I wanted a vision once, when I was a kid. Let's go People said that if you're then. mine. I lost interest eventually. You can't depend on a vision like you can your own body. I fought and won. Huh? No, I didn't. I only wanted to pit my... only in defeat. Wow. If you have the chance in the future, please come and spar with me again. Okay. I'll be stronger next time. By the way, do you know who else made it into the finals? Whether they'll be as tough as me, I don't know. But what I have heard is that they're extreme, so don't... There he goes. Maybe we should ask around, see what we can find out about our opponent in the final round. Paimon thinks we might need to up our game a little. No. अंकल यून ये तो फार्मर रनर अप है ना. Ah, it's you! I myself was a little... Maybe next time. Why, yes. I faltered for but a brief... Given my stature, I'm sure he'll be... मुझे रेडी होके जाना पड़ेगा. Let the show begin. 30 seconds. Okay. Hey there! Well, where did the other guy go? He tried to use force dispersal to deflect a punch, but instead he took it straight to the nose. His opponent was pretty freaked out by it. Why don't you dodge, they ask. Because to not dodge is the very essence of Lingshan clan kung fu. It's just that he hadn't quite mastered it yet. Okay. Don't even get me started. I don't dare tell my master about this. Otherwise I'd never hear the end of it. Sorry, I shouldn't be Oh, alright. Thanks, I'll do my... We still haven't got any useful information yet. But slightly वो opponent को ज़्यादा ही strong हो. You gave an outstanding performance. I could sense that you're not familiar with bouts of this kind, but you were quick to adapt and managed to claim victory over your opponent. That is a most invaluable skill. In fact, I discerned this not from what I saw, but what I heard. I guess not using your elemental powers must be quite new for you, huh? Yep. We wanted to ask about who our opponent will be in the final round. Do you... Not exactly. Don't tell me कि ये है. Contenders that reach the finals aren't necessarily stronger. They tend to have something unique about their style. As for the guy you'll be facing, his skill lies in his speed, and he has superior form. What's the matter? Worried that you've bitten off more than you can chew this time? If that is the case, then I have a proposal for you. I haven't yeah, we could... It is true that I am versed. I do not mean to flaunt given your Okay. talents. Hang on. Don't tell me यही होगा. Gathering intelligence. Besides our favorite. You bet... wait a second. We never told you that we've been to Mondstadt. Does one not leave a trail? However, there is come with me.
कहाँ पे लेके जा रहा है भाई? वेट अ सेकेंड. बताओ क्या बोल रहे थे? Now that we're alone, you are skilled in manipulating the elements. Yep. And not just a single element, but multiple. Paimon knew that you were hinting at something from the moment we met. You've known. That's right. If I'm not mistaken, you share these considerations, given your reluctance to use elemental skills even in the heat of a match. When I talk about that which I see or hear in you, since a young age I've been... It is things of this... As crazy as all that sounds... My humble abilities are... To think a human could wield... And not to mention your incredible... Hey, stop evaluating... Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your combined elemental abilities? Would you? So then, might I be so bold as to inquire how exactly it is that you learned to channel elemental energy and even wield it in combat? Aw, it's nothing really. Paimon just told him whatever came to mind. It's been a long journey, and many things have happened along the way. So honestly, even Paimon doesn't understand how it all works. Perhaps such unfathomable things are the essence of the gods and the visions they grant. However, I still wish to have the honor of seeing how you wield the elements. हम इसको थोड़ी ना बताएंगे कि हमको पावर्स कैसे मिल रही है ये टच करने पे. Of course, I too shall share with ये you नया है ना all that हमारे I've लिए. learned. That will make it a fair exchange. Now then, let's test your skills. Really? I'll protect us. Spin blade! Spin blade! With the wind! भाई इसने मेरे विंड वाली एबिलिटी. Get out of here! Ready, steady, go!
तो बोलो कैसा लगा शो? Your opponent is skilled at controlling his breathing and maintaining balance. He relies entirely on the element of surprise to defeat his opponents. In other words, as long as you remain mindful of his ability to detect weak points, then his attacks should pose no threat to you. Please, save your thanks. If anything, I should be thanking you for the opportunity. The world is a You seem kind of a... I desire to know what and what influence... My apology for allowing me the honor of witnessing your mystical ways. So that's what you're curious about? As you well know, a vision hunt decree is currently underway in Inazuma. Visions are a gift bestowed by the divine in the outset, not to mention with... She sounds less like... As far as I... Liyue's contracts are meant to benefit all who reside within Liyue. It goes without saying that the people locked within Inazuma do not fare well these days. Sounds a lot like... Oh? Have you encountered the Electro Archon before? With time, we will change. If you wish to find her, she will forever be there. There will come a day when I हम नहीं too बता shall सकते wish ना, to हम उससे understand मिल the चुके answers हैं. to eternity from... the time... Oh, right! If you have no other matters to attend to, then we can return together. Very well. Let's go. ओ भाई इससे लड़ना है क्या फाइनल राउंड? Go, Barbara, go! थोड़ी सी बटरफ्लाई पकड़ के दिमाग हल्का कर लो. Let the show begin. What? Never mind. We can start by making your entrance first. Everyone, listen up! Your attention, please! We've reached the climax of the Crux Clash! This is the final match! We've seen many exciting battles today, and now at long last, the two finalists have emerged. Now, I'd like to introduce our first combatant. Though few have seen him, his reputation knows no bounds. He strikes fear into the heart of Osile, and the mere mention of his name causes even the Fatui Harbingers to turn pale in the face. Introducing Liyue's Traveling Hero! Wow! I've been waiting for this moment. I'm sure everyone witnessed his thrilling match in the semifinals. But today's final round will surely take things up a notch. As for our other combatant, he still hasn't arrived. Oh, come on, what could be taking him so long? किसकी बात कर रही है? Forfeit for not showing up like in previous rounds. This apologies. Everyone just sit tight. We've got no other choice. If he doesn't show up, we'll just have to postpone the match. Wait a moment. Something doesn't seem right about this. Captain Beto, perhaps we should check on the prize. Traveler, come with us. नहीं नहीं. Don't tell me क्यों लेके भाग गया. Let me see. It's gone all right. Huh? Did somebody steal it? Who would did... We don't know when it was taken exactly. I never thought that someone here would have the guts to cross Captain Beto. No need to worry. Even the craftiest sleight of hand does not escape nature's watch. The culprit has only acted recently. The vision was the prize that I had offered, and it was my... Well, if you I'll stay here and try to offer some If you would, please come with me. But we're on an island. Where could he have possibly... Come with me. I can see... एक सेकंड, मेरे पास अभी ये है ना ताकत. मेरे को ताकत बढ़ानी पड़ेगी ना. मेरे को अपना मेन टावर लेना पड़ेगा डेंड्रो. बिना उसके हम कुछ नहीं कर पाएंगे.
आगे, क्योंकि अपना कॉम्बो यूज़ होता है ना उसमें। थैंक यू। लेट्स गो देन। अरे बट वो लड़की भी तो गायब ही है, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया क्या? सबने देखा वो लड़का, मतलब फाइनल वाला नहीं पहुंचा, बट किसी ने ध्यान दिया कि वो लड़की भी गायब है। म्यूजिक तो अच्छा बज रहा है यहाँ पे बाय द वे, ने मज़ा तो आ रहा है। अब गो टू द विंड करंट लोकेशन। नाइस। A wind current? The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. Ride the winds upward. From there we can continue our search for clues. By the way, what made you suddenly think of checking the price in the first place? I heard it the moment it was stolen. Well, then why didn't you stop him? You'll see shortly. कहाँ पे? ओके। Leaving so soon. Propagate! Prepare yourself. To ashes! ये भूल गया भाई, तेरे को पहले भी हरा चुके, तुमसे 100 आए थे। वो चीज़ हमको वापस दो। ये कुछ नया मिला। Is this an answer from this world? वो है ना उधर, अरे गिरा था, ये क्या है? कंफर्मेशन क्लूज। The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? Hubris. This way. Follow me. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario.
Guards, they're here! Get them! Treasure hoarders, just as I expected. In which case, please stand back. Let's dance. Freeze! Get out of here! Adventure time! Have a little taste. Scatter! I got careless. Picked the wrong test. That was below par. ट्रेजर होल्डर? अरे बैकग्राउंड चेक नहीं करते क्या? इनके पास भी नहीं है। The hunted. भाई इनके पास भी नहीं है। एक सेकेंड, वो देखो। वही है ना? Potato. I had even prepared a boat to ensure a quick getaway, and still you caught up to me. No boat could ever match the speed of the wind. The wind? What are you talking about? Oh, I get it. Your vision. Drat! If I only had a vision. Or if I could activate this one, then you'd never be able to catch me. This has nothing to do with visions. You may be skilled at vanishing. Additionally, your chosen is... In other words, you failed to meet any of the basic criteria for a grand heist. Namely, you... But most disappointing, it appears that the vision... Fine! Fine! I've had my eyes on this... Aha! So you... I'd intended to win. After watching the semi-finals, I knew that I didn't stand a chance. Since there was no use, I was convinced I prepared thoroughly for my escape. But somehow, you still managed to catch up to me. After all I went through to get it? I think not. I know an empty threat when I hear one. Fine. But you'd better mean it. You know, according to the laws of the... Huh? Not to mention, it seems that it would be... Whoa, whoa! We don't need... And if this is where talking gets me, then forget... Okay, finally इधर ही हो जाए। What are you trying to do? हो रहा था ना हैंड ओवर करने का। इसकी स्पीड कहाँ पर है? काहे की स्पीड है इसकी? ये ले मेरा फाइनल अटैक। Just a temporary... No, no. Do what you want, but please, don't brand my forehead, please! He has persevered to... Put down the vision and leave. I've changed my mind. Huh? What's wrong? Are you asking for more punishment? It's up to you. No. Okay. Paimon doesn't... I take no pleasure when people are forced into a corner. That is when their greatest... But unfortunately, nothing happened. Yes. From the moment he stole the vision, I've tried many other... Though few tales tell... After seeing you command Come, why don't you give it a try? Let's see if you can give me the answer I'm hoping for. The vision didn't seem to respond at all. I see. So you are also unable to rekindle the vision. No matter. This was expected. Yeah, what's the story behind this vision anyway? The story begins with an old friend. Yeah. He was once a good friend of mine. One day he asked me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. It is the pinnacle of the RYZEN Shogun's skill, a symbol of ultimate power. But he replied, there must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Then,
the Vision Hunt decree arrived. People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired, after all. When I arrived at Tenshukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. Perhaps one day I may come to find that all I have done is meaningless. But as a wandering samurai, I find meaning in traveling and the sprawling beauty of nature that lies along the way, while still retaining the warrior way in my heart. Kazuha! It's just another way of saying I do as I please. All right then, it's time we returned. Do not let my feelings trouble you, but thank you. Okay then, let's go. कब कब बहुत लंबा है आई थिंक यहाँ पे इसके बाद कोई नहीं Let the show begin. फाइनली चलो हमें हमारा टिकट दे दो Huh? Did Beta leave already?
Maybe she went back to her ship. If you're looking for the captain, she was summoned by Lady Ningguang. It seems that the Crux Clash got out of hand this time and has attracted her attention. Captain Beto was muttering something about Ningguang being But still... The one who stole the he knew he stood no chance of winning the match, thus the wicked idea of stealing the prize took hold in his mind. In which case, the Crux Clash comes to a clear-cut Huh? So that's what happened? If that's the case, then the rules stipulate that he is disqualified. And our hero... Paimon thought we'd... It doesn't matter. As the saying goes, honor given is honor deserved. Now... Yes, I believe so. But the voyage to Inazuma is, in fact... इधर ऑप्शन देना चाहिए था इन लोगों ने कि तुमको विजन चाहिए या फ्री है. She can change the weather. Let us not forget that this is one of the 7 Archons. If Liyue's Morax could form Guyun's stone forest by casting down his stone spears, then it should come as no great surprise that the Raiden Shogun is capable of summoning an eternal tempest. Suffice it to say that if you wish to journey to Inazuma, the Alcor will need some time. In the meantime... Paimon believes you'll... Thank you. One final word. मेडल ऑफ ओके ऑनर तो मिला. एक एक कंप्लीट हो रहा है, एक एक कंप्लीट हो रहा है. जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे तब भाई साथ में खेल सकते हैं. लेट्स गो, लेट्स गो, बाय. निन्यांग ने याद किया तो हमको टेंपल वो ऊपर वाले पे जाना होगा ना. Ad Astra Abyssosk. What can I do for you? Ah, yes. I've heard that you've already made arrangements. Now that I think about it... There you are. You're the traveler that Beto will be taking to Inazuma, right? The fleet is nearly completed Captain Beto sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Seems Beto is the captain of... Of course! There are many things... So you'll be heading off then? I suppose congratulations are... Whether the journey before... Until we meet again. Ad Astra Abyssosk. Oh, it's kind of hard to say goodbye now. We... But Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? I'll be awaiting you on Narukami Island. So there's another Catherine in Inazuma? See? There's no need to get all sappy now. Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading... Okay, thanks for... Just following orders. Ad Astra Abyss... एक सेकंड, मेरे को ज़रा अपने रिवॉर्ड्स तो क्लेम करने दो. थैंक यू. Ad Astra... एंड ये डिस्पैच ऑर्डर्स. ये अभी थोड़े से ये चाहिए अपने को. सबको इधर लगा देंगे. Maru. Na 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 na. एक सेकेंड, सेटिंग सेल ना. फिर से पहाड़ चढ़ो रे बाबा, पहाड़ चढ़ो.
आई होप क्लियर हो जाएगा एक में। बोर्ड 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 बोर्ड। कोई नहीं, हम ऊपर चढ़ सकते हैं ना। कैप्टन, ओ मिस्टर मिस कैप्टन, आप जल्दी आ गई वहां से। All these years, come rain or storm, Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. Okay, let's go then. The land engulfed. Anchors away! Ahoy there. So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. Seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. Oh, it's sure nice to hear you say that. With any luck, it'll give you a head start here. Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a... Oh, right! Kazuha! Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. Fair seas, Captain Beto! Bye-bye! Now then, first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Okay. Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Don't underestimate the reaches of the Sakoku Decree. You wouldn't, so we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. Finally, we are in the Inazuma. Bhai.
अरे आयुष फाइनली, एक सेकेंड। एक फोटो तो बनता है भाई, फोटो तो बनता है। एक सेकेंड। लेट्स गो, लेट्स गो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज के लिए बस करते हैं फिर इधर। मतलब कल के लिए अपने को सस्पेंस रहेगा ना कि फाइनली इनाजुमा तो कर लिया, एंड कल का थंबनेल यही रहेगा। एक सेकंड, जाने से पहले इधर की मछली पकड़ ले। मछली मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मच्छी तो बनती है ना, इनोजुमा की मच्छी है भाई। किधर गई मेरी काठी, किधर है वो? ये इसको यूज कैसे करूं मैं? इसको यूज करना है मेरे को। हाँ, भूल गया था। मेरे घर भी भेज देना। अरे कोई शक? आ जाओ। ये मछली क्या खाती है फिर? ये खाती है क्या? अरे ये तो दूर भाग गई। आ रही नजदीक आ रही, नजदीक आ रही है। मेरे को वहां ऊपर क्या देखना है। ये मछली तेरे को रेडन का स्वॉर्ड के लिए काम आएगा। क्या बात कर रही है, कर रहे हो आयुष? सॉरी। अब ये तो खा लो। ओके, मेरे को सारी मछलियाँ चाहिए इधर की। फिर ये कुछ ज़्यादा ही झटपटा रह रही है। That was a tough fight. तीसरी भी चाहिए मेरे को। आते ही इनाजुमा पहला काम क्या किया हमने? मछली पकड़ रहे। इतनी लड़ाई लड़ी, इतना मेहनत किया, और आते ही क्या कर रहे? मछली पकड़ रहे। इतनी बार वो स्टैचू ऑफ 7 के लिए हमने इतना झंझट मारे किया, और बस एक मछली, आते ही मछली।
वैसे कितनी मछलियाँ चाहिए बोलो? Almost ours. What is it? What is it? Is it another Paimon? किसिंग करवा रहा था तू भी है? काहे की? अरे उनका मुंह देखो पहले कितना बड़ा है। वो देख कैसे घूर रही मेरे को। सॉरी बट तुम्हारा यूज मैं अच्छे से करूँगा। Steady now. It's the final stretch. Wow, Paimon's stomach is rumbling हाँ already. चलो। फ्लफर फिश ना बैग्स में वैसे बहुत सारी हो चुकी है। मछली का काउंट मेरे को दिख नहीं रहा, कहाँ पे मैं पकड़ रहा हूँ। काउंट्स मेरे को खुद को दिखना भी तो चाहिए। मैं तो कुछ दिन से गेंशिन इम्पैक्ट नहीं खेल रहा पा रहा। क्यों? अरे तुम्हारी तो वो एग्ज़ाम वगैरह चल रही है ना, पहले एग्ज़ाम पे ध्यान दो, बाकी सब तो होता रहेगा। चलो माय डिवाइस इज ब्रोकन। पूरा हो तो हुआ है ये भाई। ये पूरा इतना इनाजुमा है, ये पूरा ब्लैक पैच इतना सारा, ये इनाजुमा है। तो ज़्यादा ही बड़ा नहीं है क्या? मतलब जो बर्फ़ में हमने शुरुआत में जब तुम नए नए आए थे मेरे को हेल्प करने के लिए, तो वो सब किया, वो कुछ भी नहीं था ऐसा देखा जाए तो। उसका कुछ नॉर्मल क्विस्ट ही नहीं है भाई, इज्जत नहीं है उसको। वो देखो उधर, वहाँ पे चांद भी अच्छा खासा दिख रहा है। हम ठहरने के लिए भाई वो सब इनाजुमा का है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए इधर कल तक के लिए रुकता हूँ। इनाजुमा का क्वेश्चन है वो। यहाँ पे सब बेचने वाले ही है क्या? चलो ये यहाँ पे बिल्ली के साथ हम बैठते हैं अभी यहाँ पे। चलो आई, अरे कपड़े गीले हो जाएंगे रे ये डे की, क्यों खुदा। आते ही मर गए। ओ भाई ये भी नहीं से। चलो मैं आज इधर बैठ जाता हूँ तुम्हारे साथ। एंड दोस्तों, और क्या करते हैं आज के लिए, बस करते फिर यहाँ पे, ठीक है। कल हम रेडन का क्विस्ट, मतलब रेडन जो, ये रेडन बोल रहा हूँ, इनाजुमा घूमेंगे पूरा का पूरा, ओके। वो देखो उधर एक महल, यहाँ पे भाई पूरा का पूरा एकदम मज़ा आएगा एक्सप्लोर करने में। तो अब देखो ना, नए क्वेस्ट भी अनलॉक हुए। ये देखो ये नहीं कर पाए, वो देखते हैं अभी आगे क्या है। इनका बहुत बड़ा है भाई, क्वेस्ट बहुत बड़ा है।
जब तक हम ये नहीं ख़त्म करेंगे तब तक हमें आगे के क्वेस्ट नहीं मिलेंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, चलो आज के दिन के लिए अच्छा है। हम कितने 6:45 बजे आए थे बराबर, मेरे को याद नहीं रहे। 6:40 को हम आए थे, 6:45 ही पकड़ लो। और बजे अभी 7:30 10:30, तो 7:45 7:45 8:45 9:45 एंड ये 10:30, तो 7 ही पकड़ लो। 7 8 9 10 3, ये 3:30 और 4:45 घंटे हो गए अपने आज के, तो कोई बात नहीं। हाँ कल थोड़ा ट्राई करूँगा और थोड़ा जल्दी आने का, 10 मिनट जल्दी आएंगे कल, 6:30 बजे आने का ट्राई करते हैं। ओके तो मिलते हैं अगली स्ट्रीम में, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। एंड अगर बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगली स्ट्रीम में, तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बी सेफ, भेटूया पुढच्या स्ट्रीममध्ये, तोपर्यंत चला येतो, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, शुभ रात्री।